अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ जुड़ने आए हैं। ये अयोध्या का जो मामला चल रहा है या राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद, तो ये इसके सब की हिस्ट्री को आप काफ़ी देख चुके हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद वालों का क्या मौक़िफ़ है और इसमें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का एक इंग्लिश में बयान है, कमाल है, उसको आप सुनेंगे। असल में ये जहर घोल के गया था अंग्रेज़ के यहाँ पर जो है वो राम की पैदाइश हुई है, जो कि हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा हुआ। उसके बाद जब हिंदुओं को मौका मिल गया तो उन्होंने, और फिर हुकूमत हिंदुओं की आ गई, योगी आदित्यनाथ हो गया, मोदी हो गया, इनकी जब वो आ गई, हुकूमत आ गई, तो इन्होंने मौका देखा कि वोट कैसे हासिल किए जाए। इसके लिए उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, मीडिया पे आम किया, और उसके बाद राम मंदिर का नक्शा बना और उसको अब इफ्तिताही तकरीब आ रही है। इन इफ्तिताही तकरीब के जो हवाले से मौलाना अरशद मदनी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब दोनों देवबंद के हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इंग्लिश में बयान है। आपसे गुजारिश है कि आप इंग्लिश जानते हैं, आप इसको सुने। बहुत ज़बरदस्त तारीख़ उन्होंने बयान की है, और अगर आप नहीं समझते इंग्लिश तो आप नीचे जो है वो सीसी जो होता है ट्रांसलेट उर्दू में, आप इसको ऑन कर सकते हैं। कोशिश है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब भी कोशिश कर रहा है कि एआई के ज़रिए से वीडियोस को हर ज़बान में ट्रांसलेट किया जाए। उम्मीद है जल्द ये आ जाएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे हर ज़बान में वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। एक बात ये कही जाती है अयोध्या से मुताल्लिक़ कि वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे, ऐसी ख़बरें आ रही हैं। तो हम इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फ़ैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फ़ैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फ़ैसला गलत माहौल में, गलत तरीक़े से, गलत बुनियादों पर किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वज़ीर आज़म को ना किसी मंदिर, ना किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मज़हब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं, और आपको पता है जमीयत उलेमा हिंद भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। अयोध्या मामले में भी जमीयत उलेमा हिंद ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई में भी जमीयत उलेमा हिंद का बहुत योगदान रहा है। मदनी साहब से तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। मदनी साहब ने हमें वक्त दिया है। मदनी साहब, कैसी है तबीयत, कैसी है आपकी? बस सर्दी का असर है, इसकी वजह से तकलीफ़ें रहती हैं। बुढ़ापे के अंदर जैसे आदमी की उम्र होती है वैसे ही बढ़ती जाती है, तकलीफ़ें भी बढ़ती जाती हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कवर की थी जब कुछ दिन पहले दिल्ली में थे। तमाम मुद्दों पर आपने अपनी बात बेबाकी से रखी, चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो। इस समय सबसे बड़ा मामला जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का है। चर्चा उसी की हो रही है। कांग्रेस ने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये मंदिर आधा बना हुआ है, तमाम शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। इस पूरे जिस तरीके से इतना बड़ा इवेंट बना दिया देश में, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, साथ में मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख है वो रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, पूरे राज्य भर में छुट्टी कर दी गई है। उस पर आप इस पूरी इवेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा मसला ना राम मंदिर की शुरुआत करने से है, ना हमारा मसला उसको सियासी मसला बनाने से। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई तो 65-70 साल इस चीज़ पर रही कि ये जगह अपनी मस्जिद की है या यहाँ मंदिर था, ये जगह राम जन्मभूमि थी, उसको तोड़ करके बाबर ने यहाँ मस्जिद बनाई है। हमारा मसला सिर्फ इतना था। हम ये कहते थे कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है और वो मस्जिद की जगह नहीं है तो हम उसको मस्जिद नहीं मानते।
ہمیں یقین تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد ہی تھی، جب سے بنی ہے آج تک مسجد ہے، اس سے پہلے یہ جگہ خالی ہوگی۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کورٹ نے ایک آدمی نے نہیں 3 آدمیوں کا فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی ہے۔ ہم نے اس فیصلے کو مان لیا، انہوں نے دے دیا۔ ہم یہ غلط سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ مسجد تھی تو مسجد والوں کو مسجد ملنی چاہیے تھی۔ ہمارا مسئلہ اس جگہ پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج جہاں مندر بنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ مندر تھا، مسجد کو توڑا۔ سپریم کورٹ ہندوستان کا یہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ جہاں آج مندر بن رہا ہے یہ ہمیشہ سے مسجد تھی، یہاں کبھی مندر توڑ کر نہیں بنا، یہ رام جنم بھومی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور 3 جج کہہ رہے ہیں سے۔ اور چونکہ آپ اتنے ذمہ دار ویکتی ہیں، 22 تاریخ کو جب پران پرتشٹھا ہوگی تو تمام طریقے کے بیان آ رہے ہیں، ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ گریراج جو کہ کیندری منتری، ان کا بھی بیان آیا، آپ کیا اپیل کریں گے دیش واسیوں؟ نہیں، میں ہر وقت ہر جگہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و امان اور بھائی چارگی زندہ رہنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک زندہ اسی طرح رہے گا کہ ہر آدمی ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو۔ کسی بھی آدمی کی طرف سے جھگڑا اور فساد، میں اس کا یا جمعیت علماء اس کی تائید نہیں کرتی، قطع نظر اس کی کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی بات ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کو جہاں کوئی خطرہ ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، تاکہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 جانیں بھی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا امان بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کو خرابی سے بچانا ہر ہندو، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ We know that few years back there was a political gimmick, the Babri Masjid and Ram Janmabhoomi issue. You know Babri Masjid, Ram Janmabhoomi issue in Ayodhya. I would like to know how many of us Muslims and Hindus knew about Babri Masjid and Ram Janmabhoomi before the politicians made it a gimmick. How many of us knew? I had never heard of this Babri Masjid. And when I asked the common Hindu, he had never heard of this. Only after the politicians made it a political gimmick, people knew about it. And we know on the 6th of December 1992, they wanted to have a big procession, a gathering at this site. The Supreme Court had explicitly said that no gathering anywhere close to the disputed site. A group of politicians, they make it a political gimmick of Ram Janmabhoomi issue and the Babri Masjid issue. They want to gather on 6th of December. The ruling politicians know very well that they have the Supreme Court backing. They could have easily stopped the gathering, easily. But then they think, if I stop, I may lose vote. So they let the gathering take place. The gathering takes place, and then they say, spontaneously, the thousands of cars were gathered there. Spontaneously, the Babri Masjid was destroyed, spontaneously. You know, there was live recording on the various satellite channels. We know that with trishuls and lathis, how can you get down a structure? Is it possible? No. They had planted explosives. With this pre-planned act, that planted explosives, anyone can see. You don't have to be a specialist of military. You can see it with your eyes. That explosive were planted, and that's how the structure came down. Can the structure come down with lathis and trishuls? Maybe George Bush saw this. 6th December 1992, that's how he had conducted the inside job of 11 September. Time does not permit me to speak about the inside job. That requires a lecture by itself. Inside job of 11 September. Many Americans have spoken about that. Maybe he saw it and he got the idea that let's conduct in New York also. Later on, what happens? This emerges into riots. Throughout the country,
there were riots. It is the largest riot after partition in the whole country, where tens of thousands of innocent human beings were killed, mainly Muslims. Who's to blame? The innocent Indians. They are instigated by the politicians. Fight, kill the opposite religion people. Instigated, innocent people, they get instigated and they do the act. We know that even in Bombay, one of the cities that was maximum affected was Bombay. Even during partition, the riots that took place in Bombay was the worst in the history of Bombay. Even during partition, so many people were not killed as during the December 92 and January 93 riots. The police, if they wanted, they could have easily prevented the riot, very easy. With the backing of the reserve police, with the backing of the military, easily they could have done it, but they did not do it. Most of them were silent spectators. Some were good, they tried, but they were in a minority. Majority were silent spectators, some were party to it. I am aware that even the police is controlled by the politicians. So the police wants to do something, the politicians come in between. So the blame goes back to the politicians. Later on, the government appoints a single judge commission to appease the minority. And they appointed Justice Srikrishna. It was famously called as the Srikrishna Commission. And we know that Justice Srikrishna, he was and is a devout and a practicing Hindu. But at the same time, he is an upright and honest judge, just like how we have Justice Suresh here. An honest and an upright judge. The verdict he gave, it did not go down the throat of the government. It takes a few years. And he had analyzed the full cases of the riots. He spoke with the politicians, with the police. Individually, he visited 26 police stations, analyzed the records, spoke with the police officer, junior and senior, spoke with the victims, spoke with the media, and after a great deal of research, he presented, we have this damning verdict of Srikrishna Commission. He even gave suggestions, how can we prevent these riots? But, it takes time. By the time this happened, the government says bygones are bygones. Because they know if they implement the report, they are afraid that they will lose the vote bank. At that time, to appease the minority, they appointed the commission. How many commissions? I don't know. I don't know how many commissions have been implemented. I think Justice Suresh can tell. How many commissions that they appoint have really been implemented in India? How many? So here we know it is a delaying tactics. The innocent Indians, especially the Muslim victims, we have faith in the judiciary system of India. If the politicians betray us, if our other citizen fellow members betray us, if the police betrays us, in this country, we have yet faith in the judiciary system. And we know that finally, most of the innocent people, whether they are arrested, etc., they are finally released. But the damage done to them, it cannot be undone. Later on, we come to know, after a couple of months, on 12th of March 1993, there was a series of 13 bomb blasts in Bombay, in which more than 250 innocent citizens of Bombay were killed. More than 250 innocent human beings were killed. And more than 700 human beings were injured. The opposition said, oh, planned everything. Justice Srikrishna said, it was not meticulously planned, it was a retaliation. More than 1,500 innocent Muslims killed in riots in Bombay. More than 1,500 innocent Muslims during the Bombay riots of December 92 and January 93 were killed. It was a retaliation. And the authorities and the police said it was done by Muslim underworld with the help of some others. That's how the bomb blast took place. And they say, all of them agreed, even the police commissioner, they agreed that it was a retaliation to what had happened in Bombay. We know that immediately after the riots of December 92 and January 93, it was difficult for the Muslims to walk on the streets. It was difficult for him to travel in the train, travel in the bus, to work in a non-Muslim area. They were looked down upon, they were ridiculed. Immediately after 12th March 93 bomb blast, those scenario changes. Most of the Muslims, they know that killing innocent people is prohibited. Yet,
they had a soft corner for these people who did the bomb blast. They were happy internally. In Islam, two wrongs don't make a right. Islam condemns this act. Killing innocent human being is to be condemned. You cannot kill innocent human being if somebody else has done injustice to you. You can't kill a third person even if you belong to the same community. Islam prohibits that. Whoever did it, whether Muslims or non-Muslims, whoever killed more than 250 innocent human beings on 12th March 1993, Islam condemns it. Most of the Muslims knew that killing innocent people is haram, it is prohibited, yet they were internally happy. But you cannot use wrong means to reach a right goal. You cannot. Islam does not permit that you use the wrong method to reach a right goal. There cannot be any justification. We realize that Muslims are harassed, they were tortured, they were killed, but you can't justify the killing of innocent human beings. Imagine the family of those more than 250 innocent human beings. When they come to know that the Muslims have killed us, they will think, what kind of religion is this? What wrong did they do? Did they harass you? The person who has harassed you, if you catch him and put him to trial and he is a culprit and you punish him, no problem. All religions will give you permission. The innocent people killed on the street, what wrong they did to you? Imagine he will become a permanent enemy of Islam. Islam does not justify the killing of any innocent human being. It is to be condemned. When we realize the chain of sequence of events, who is to be blamed? We come to know that prevention is better than cure. Who is to be blamed? When we see the sequence of events, we come to know that if the opposition politicians, the politician from the opposition party, if they would not have used Babri Masjid and Ram Janmabhoomi issue as a political plank, the Bombay bomb blast in 93 wouldn't have taken place. Later on, the politicians in power, they could have easily prevented the gathering. They could have easily prevented the destruction of the Babri Masjid. Easily. They had the Supreme Court verdict. They had the military, they had the police, but they were afraid that if we do it, we'll lose vote bank, so they let the destruction take place. Second people responsible are the politicians in power. Third people, the innocent Indians, they are instigated against the minority. And they involve in killing of thousands of innocent Muslims. They are too responsible. But they are innocent people. Fourth people responsible is the police. The police could have easily prevented the riots in Bombay or anywhere in India, easily. The normal civilians, we are military trained. We cannot fight with the police. It's easy. It's very easy for the police of any city, especially Bombay, to prevent the riots. Very easy. Preventing terrorist attacks is difficult. I'll come to it later on. But riots is very easy. Easy. But they didn't do it. Some were afraid. There were a few who went out of the way and helped the innocent victims, but the majority were silent spectators. Some even were party to it. Some who were silent spectators, they were afraid that if we went against the politician, we would have been transferred. They too are to be blamed. Fourth people to be blamed are the police. Fifth, last but not the least, the people who committed the bomb blast. Islam does not give permission to use wrong means to reach the right goal. All five categories are to be equally blamed. If you want to stop terrorist attacks, go to the root cause. Stop the injustice. Stop the wrong done to a particular group of people and terrorism will stop. तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो हिस्ट्री थी बयान करना, वो बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया। अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ब्रिटिश भी इन्वॉल्व हैं, और इन लोगों ने जाके ना पहले से ही ये निज़ाम बनाया हुआ था कि भाई इस तरह करके बाबरी मस्जिद या इस्लाम का जो है वो डाउन किया जाए, इस्लाम को, और हिंदुओं को जो है वो किया जाए, ऊपर लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें परेशान करती हैं, फिर माशरा ख़राब होता है, लोगों का कत्लेआम होता है, और उसके बाद जो है वो लोग नफ़रत भी करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद वाले हज़रात जो है मौलाना अरशद मदनी साहब हो गए या मौलाना महमूद मदनी साहब हो गए, दोनों बड़े मजबूत हैं, और इंडिया की सबसे बड़ी जो कन्वेंशन है या जमात है वो है जमीयत उलमा हिंद। माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने काम किया हुआ, वहाँ पर बहुत सारे शोबजात हैं। तो
ان کا اس وقت یہ کہنا کہ بھائی ابھی آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ بھئی یہاں پر مسجد تھی پہلے، اس مسجد سے پہلے مندر تھا کہ نہیں تھا؟ اگر مندر تھا تو ٹھیک ہے، تم لوگوں نے مسجد بنائی ہے، اور اگر مندر نہیں تھا تو کیوں بنائی ہے؟ تو یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ کوئی مندر نہیں تھا یہاں پہ، ہسٹری میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، اور جھوٹ بول دیا گیا کہ یہاں پر پہلے، یہ انگریز جھوٹ بول کے گیا ہے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا اور اس کے آثار ملے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس پھول ایک باغ کے اندر مختلف پھول ہیں اور ان سارے کے سارے باغیچے کو آگ لگانے والی بات ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کا حساب کتاب ہونا ہے، مرنا ہے، اگلا جنم ہے، قیامت ہے، قیامت کے بعد زندگی ہے اور حساب کتاب ہے۔ بہرحال آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں بتائیے گا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔